Hello and welcome to Legal Anecdotes. Today, we all are gathered here to discuss about the Citizenship Amendment Act 2019, which is in the news right now. और इस पे बहुत सारी debates भी हो रहे हैं, opinions भी divide हो रहे हैं. So we'll discuss every aspects of Citizenship Amendment Act, and we have Saurav Joshi here and Saujanya Sarkar. Hello, Saurav and Saujanya. तो Hi. जैसे कि हम लोग Hi. जानते हैं कि हाँ या हेलो. सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास किया गया था. तो हम लोग एक एक करके सबके व्यूज इसमें जानेंगे और हम लोग ने पार्ट्स को डिवाइड कर दिया है वीडियो के. तो फर्स्ट वैसे हमारा आता है बेसिक्स ऑफ सीएए की बेसिक्स क्या आते हैं. सो सौजन्या, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्हाट व्हाई इज दिस टॉपिक इन न्यूज करेंटली. Sure. So the main reason why the CAA, that is the Citizenship Amendment Act, passed by the government in 2011, 2019, December 11, was in news because the government का idea है is to provide asylum or to the refugees of the minority communities of Hindus, Sikh, Buddhists, Jain and Parsis and Christian religion who live in the neighboring countries of India, which includes Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. The government strongly believes that ऐसा अगर हम करते हैं, if we provide them political asylum and refugee to this minority community who faces religious intolerance in their particular country, or they are made forcefully converted to Muslim religion or any other particular religion, and if we do so, and if we provide them political asylum, they will be having a better livelihood, and the main idea of human rights will be uplifted in the society. So first of all, I would like to cover what is Citizenship Amendment Act. So the Citizenship Amendment Act of 2019 is an act which was passed by the Parliament in December 11, 2019. The CAA allowed the citizens of religion. So this is an act which was passed on the basis of religion, which includes Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, and Parsis, and Christian religion, who faced religious prosecution in the neighboring countries and wanted a political asylum in the country of India will be given citizenship or a permanent citizenship in the country of India. Under CA amendment, the main things that are brought into that were being highlighted by the government are that the migrants who entered India before December 31st, 2004 and had suffered religious prosecution or fair religious prosecution in their country of origin were made eligible for the citizenship of the of India and will be granted the proper citizenship within the phase of 6 years. The amendment also reduced the requirement of national year limit from 11 years to 5 years for those individuals who are coming under the CA, that is Citizenship Amendment Act of 2009. At the same time, right now, before my colleagues cover why it is important, why it is what impact will it have in India, I would like to cover the historical point of view. So India got independence on 15th August 1947. After that, India didn't have a proper secular origin of Indian citizenship in the Indian constitution. It was more of an unsecular origin, where there was a two-wave of partition that took place. First partition wave took place in 1st March 1947, where the people from Pakistan migrated to India, which people, though in this migration included people from the religion of Hindu and Sikh, who migrated from West Pakistan to India because they were religious minorities in that particular country. The second wave of migration took place in 1940. It was a large wave of migration which was done by the Indian Muslims who, during the independence of India, that is during 1947, migrated to Pakistan but wanted to come back to India because it was totally the real image of Pakistan was totally different from what they had imagined to be, or what Jinnah had propagated when he created Pakistan. The return of Indian Muslims created a massive administrative problem for the people as well as for the administration and the local system, which was just being started by the Indian government. Due to which, and the main problem that was upheld by the government was that most of the houses and the properties that were being left by the people who migrated from India to Pakistan were given to those people who came from Pakistan. That were the Hindus and the Sikh population. At the same time, the Constitution of India had also divided the
divided the people who are migrated to India into two parts, where the person following the religion of Hinduism and Sikhism were considered as displaced persons, whereas the person or the Indian Muslims who wanted to come back to India after 1948 were referred as evacuees. At the same time, their property were claimed as evacuee properties. The government, to tackle this situation, had introduced a permit system. The permit system ultimately gave veto power to the provincial government to to put a permanent restriction over the over the people who, at the time of independence, left India and wanted to come back India after for 19th July 1948. This system was done because, according to Dr. B.R. Ambedkar as well as Pandit Jawaharlal Nehru, both of them believed that if it is not done so and we allow the Muslims to come back to India, it will ultimately create a communal tension in the society. And as quoted by B.R. Ambedkar in his statement, he stated that it will ultimately uplift the RSS and the communal environment in India, which would have been a massive problem for a country like India, who has just got independence from the rule of Britain or the Great Britain after 200 years. At the same time, Article 567, which is referred as an article of secular idea, is not neutral in nature. It can be understood with the help of an example where the permit system, which was established in West Pakistan, where a person who wanted to come back to India, who left India, especially the Muslims, who had to take a permit. At the same time, the provincial government had the authority to stop them from giving a permanent residential permit to live in India, was not applicable in East Pakistan, which is at present referred as Bangladesh, because both Pandit Jawaharlal Nehru as well as B.R. Ambedkar was well aware that more than 16 million Hindus and Sikh population is residing in Pakistan, in East Pakistan, and if they establish this permit system in that particular East Pakistan, then those people will also be not allowed to come and join the hand of India and become an Indian citizen. So this also shows that India doesn't have a very bright and colorful history of establishing a proper Indian citizenship under the Indian Constitution. We also have various dark phases where a massive discrimination was made by the Constituent Assembly, as well as the leaders of during that time, that includes Jawaharlal Nehru and B.R. Ambedkar, who had made a critical discrimination on the basis of religion, at the same time on the basis of a person's caste, as well as at the same time on the basis of which region or which part of Pakistan they are coming, which shows that the Citizenship Amendment Act from the very beginning had a very dark and a very bad impact over the society. And it is a concept which is need to be taught in a very better way by the scholars as well as by the politicians before implementing it into India. Yeah. So, sort of, can you tell me what is the application process under CA, which has been implemented by the Indian government right now? Okay, sure. So the application process is very simple. You have to just apply online. और उसके अंदर क्या करना है कि तुम्हें जैसे अगर तुम इफ यू आर बिफोर इमिग्रेंट ऑफ बिफोर 2014 31 December Yeah. 2014, तो तुम्हें बस एक क्या करना है कि you have a basic eligibility. I also told you the eligibility criteria in the same manner, in the same application question. So basically you just have to Yep. be a just have a identity card. What is your identity, where you from, and what is the reason why you asylum here? What are the need of their, is there any atrocity in in your country or something else, like if why you Mhm. are, simple question is why you are immigrate from your country. Okay, so basically you just have to be, you have a identity card, and you just have to apply online. And citizens say there is a website of government, official website of government, where should you have to apply. And apart from that, if you talk about eligibility criteria, you have to be a religion of certain criteria of religion, that is Hindu, uh, except Muslim. Mhm. There are six religion Yep. which we are talking about now, right now, that is Hindu, uh, Sikh, and Parsi, and Yeah. I This is don't where I remember, guess, Buddhist, and हाँ, जैन है.
Jain. Yeah. So they So have there are listed six the religion. religion. Yeah, I Yeah. guess. Yeah. So they just listed the what are the religion should be should have eligibility to apply in the Citizenship Act Yes. Yes. for the citizenship. And if you're talking about the what is the eligibility criteria for Muslim immigrants, so there is no till now वो सब ये कह रहे हैं कि you just have to naturalize through you have just have to gain citizenship through naturalization, which has a certain criteria. You have to Yeah. live here for a certain time period of certain year of and that's all. I think these are the things which are covered in the application eligibility Yes. criteria. Yes. Okay. So next we'll talk about the effects of the CA on Indian citizen as well as the Muslim immigrants who have migrated from different countries to India. So the effect to citizens as well as the Muslim migrants from different countries. So अगर हम पहली बात करें, does the CA affect an Indian citizen? The simple answer is no. CA किसी भी इंडियन सिटीजन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि दिस सिंपली टॉक्स अबाउट द इमिग्रेंट्स और द माइग्रेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. तो ये इंडियन किसी सिटीजन को अफेक्ट नहीं करने वाला. व्हेन वी टॉक अबाउट मुस्लिम इमिग्रेंट्स, तो मुस्लिम इमिग्रेंट्स पे इस तरह से अफेक्ट करने वाला है कि गवर्नमेंट क्लियरली कहा है कि सिर्फ जो 6 रिलीजन उन्होंने लिस्ट किए हैं, सिर्फ उनके जो कि माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं इन कंट्रीज में, उनको ही सिटीजनशिप इंडिया में दी जाएगी, जो 2014 के पहले इंडिया में आए थे. तो मुस्लिम इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने की कोई बात अब तक गवर्नमेंट ने नहीं कही है. सो दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ ऑन मुस्लिम इमिग्रेंट्स एंड इंडियन सिटीजन. इंडियन सिटीजन पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, मुस्लिम इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप नहीं मिलने वाली जो दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड माइनॉरिटीज. क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं और इवन बांग्लादेश की बात करते हैं, वहां पे मुस्लिम्स आर द मेजोरिटी पॉपुलेशन. दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसिडर्ड रिलीजियस माइनॉरिटीज. और हमारा अगला टॉपिक इसमें आता है कि व्हाट आर द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द सीए इन इंडियन सोसाइटी. तो अगर हम सोशल इफेक्ट्स की बात करें, तो सोशल इफेक्ट्स हमारे पास ये होने वाले कि जैसे दूसरे कंट्रीज से माइग्रेशन होके माइग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं, इमिग्रेंट्स आते हैं, तो दे कैरी अ सर्टेन कल्चर एंड हेरिटेज विद देम. कि अगर कोई बांग्लादेश से आ रहे हैं, उनकी एक सर्टेन कल्चर फॉलो करते हैं, अगर वो पाकिस्तान से आ रहे हैं तो वो भी अलग कल्चर फॉलो करते हैं. सो हियर वील सी अ डिफरेंट मिक्सअप ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इन द इंडियन सोसाइटी, क्योंकि इंडियन सोसाइटी का एक पर्टिकुलर हेरिटेज कल्चर वो फॉलो करते आ रहे हैं. तो यहाँ पे एक मिक्सअप होने वाला है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स में हम इसकी बात कर सकते हैं. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी इसके होंगे कि एक क्रॉस कल्चर ट्रेडिशन यहाँ पे डेवलप होगा. नेगेटिव प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलेंगी, जो कि उस पर्टिकुलर रीजन में इंडियन सिटीजन जो रह रहे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगे. अगर हम पॉलिटिकल इफेक्ट्स की बात करें, तो ये एक पॉलिटिकल इफेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में जरूर जाएगा, क्योंकि आपके पास वोटर्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं. अगर दूसरे कंट्रीज से आपके पास इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ पीपल हु विल वोट यू will be increased. So it is definitely helping the political parties or contesting elections in those regions. और अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करें, इकोनॉमिक इफेक्ट जो कि सीए का पढ़ने वाला है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि इंडियन सिटीजन के लिए डेफिनेटली एक लॉस होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन पहले ही बहुत ज्यादा है, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हम देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है. और उसमें अगर और पॉपुलेशन इंडिया में आ जाए, तो इकोनॉमिकली इट इज नॉट गोइंग टू बी फीजिबल. और इंडियन जो सिटीजन हैं, जो कि काफी टाइम से इंडिया में रह रहे हैं, उनको नुकसान होने वाला है, क्योंकि उनके जॉब्स के में कंपटीशन बढ़ जाएगा. और हर इकोनॉमिक जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हर सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को, उसमें कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगी. तो दिस इज द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ सीए और इंडियन सोसाइटी, ये असर पड़ने वाला है. तो इसके बाद अगर हम बात करें प्रोटेस्ट जो कि हुए, तो सौरभ क्या बता सकते हो कि प्रोटेस्ट किस लेवल पे हुए थे सीए के अगेंस्ट में, पहले और अभी भी? ओके, सो अभी तो प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले 2019 में जो प्रोटेस्ट, जब ये सीए जो मेन जब अमेंडमेंट हुआ था, इसका अमेंड हुआ था, तो ये जो अमेंड हुआ था, तो एक पूरा ही अलग एक पूरा ऐसा लगा था कि देश दो हिस्सों में बंट चुका है। मतलब ऐसा देखा जाए तो जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स है, बेसिकली वो ज्यादातर एक तरफ हो गए थे, और जो एक तरफ के रिलीजन है ऐसा कुछ हो गया था कि उन्होंने ऐसा बोला था, जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे वो बेसिकली एक पर्टिकुलर रिलीजन के तरफ से हुए थे, जो कि मुस्लिम है, मुस्लिम ज्यादातर। हम्म. तो तो प्रोटेस्ट में देखा गया कि जैसे प्रोटेस्ट दिल्ली से शुरू हुए थे। दिल्ली में बहुत सारी चीजें खराब हुई, जैसे जामिया में तुमने ऐसे सुना ही होगा, 2019 में न्यूज़ आ रही थी, 2019 से लेकर 20 तक जो न्यूज़ थी कि आ, कि कई लोगों की जान जा रही है प्रोटेस्ट में, गोलियां चल रही हैं, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, मतलब जिससे गवर्नमेंट का उसका, लेकिन उस समय कोई ऐसा वो नहीं था कि उनका कोई मतलब अपोजिशन की तरफ से बहुत सारा था कि वो बोलते जा रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट उस पर कोई रिएक्ट कर नहीं रही थी उस समय भी। तो देख हम्म. उनका ये था कि
बेसिकली कि उन्हें बस ये अमेंड मतलब पास करवा के इसका इम्प्लीमेंटेशन कराना है। तो जब और शाहीन बाग में बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, आपने गौर हाँ, किया होगा, शाहीन बाग जब वाला प्रोटेस्ट सीए को जो किया गया बहुत था। ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, और बिल्कुल। मतलब ऐसे देखा है, मतलब सिटीज में बहुत जगह पे प्रोटेस्ट हुआ था उस समय भी। जहां तक हम देखा जाए तो आसाम में जो अभी भी चल रहे हैं प्रोटेस्ट कि वाई इट इज शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया राइट नाउ, व्हाट आर द कल्चर, क्या क्या कल्चर डिफरेंसेस आएंगे उसकी वजह से वहां पर आसाम में। और तमिलनाडु की तरफ अगर तुम जाओ साउथ की तरफ तो वहां पर भी स्टैलिन है, वहां पर जो भी सीएम है, उन्होंने तो सीधे मना अंतिम कर दिया मिनिस्टर। कि हाँ, वी आर नॉट गोइंग टू बिल्कुल। implement this CAA in our state। सो लेकिन हम्म, प्रोटेस्ट बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन इस पे कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि क्या इसका क्या करा जाए। और बेसिकली अगर गवर्नमेंट से कुछ पूछो तो वो सीधे कहती है कि देर इफ यू टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम्स, दे हैव अ डायरेक्ट राइट टू गेट अ न्यूट्रल सिटीजनशिप थ्रू द न्यूट्रलाइजेशन। तो उनका वही था। यस यस और एग्जैक्टली। प्रोटेस्ट भी देखा जाए तो साउथ में, नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि कई बार जो एक ये भी लोगों का ओपिनियन कि वाई जो म्यांमार के जो लोग हैं उनका भी बहुत से में रिफ्यूजी हो रहे हैं, मतलब रिफ्यूजीज हैं वहां पर अभी भी इंडिया में हम्म, बहुत सारे। तो उनको हम्म, उनके लिए भी था कि वाई दे आर, उनको ऐसा कुछ लाइमलाइट में फिर ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि म्यांमार को इंक्लूड नहीं करा गया। जैसे अगर देखा जाए तो कि बिल्कुल बिल्कुल। अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंक्लूड करा गया है। तो उसकी एंड उसके उन्होंने बेसिस पे भी श्रीलंका प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज को भी इंक्लूड नहीं किया है। हाँ हाँ, नेपाल हो गया, श्रीलंका एंड अदर एग्जैक्टली। नेबरिंग कंट्रीज, तो उनको भूटान। इंक्लूड नहीं करा है। भूटान ने भूटान भी कह सकते इंक्लूड हैं। नहीं किया गया, बिल्कुल। हाँ, तो हम्म। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं कि एक सर्टेन कंट्रीज को या फिर क्यों लिया जा रहा है ऐसा करके। और देखा जाए तो प्रोटेस्ट इसलिए भी हो रहे हैं कि कई लोगों का ओपिनियन कि इट इज अ डायरेक्ट एट्रोसिटीज टुवर्ड्स द सर्टेन रिलीजन, दैट इज मुस्लिम। तो इसलिए भी बहुत सारे प्रोटेस्ट इसलिए भी हो रहे हैं। एग्जैक्टली। प्रोटेस्ट तो इसलिए ही हो रहे हैं। हम्म। और चलो आगे बढ़ते जैसे हम सीए की बात करते हैं, उसके साथ हमें कुछ और वर्ड्स भी सुनने को मिलते हैं डेली, तो जैसे कि एनआरसी और एनपीआर, ये दो कॉमन टॉपिक्स हैं सीए के साथ साथ। तो आप दोनों उसमें बताना चाहेंगे एनपीआर बेसिकली है क्या, ये थोड़ा ब्रीफ में अगर आप इंट्रोडक्शन देना चाहें इसके बारे में तो। So okay, so NPR mainly stands for National Population Register. This is a comprehensive register that includes detailed record of all the residents in India, regardless of their citizenship status. ओके। बिल्कुल। तो नाइस। इस पे बेसिकली क्या हमें क्यों रजिस्टर ये क्यों करना है, मतलब क्यों इंडिया इसे इम्प्लीमेंट करने जाता है, फिर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट क्यों करने जाती है। तो बेसिकली कि इस पे क्या होगा, सारे रिकॉर्ड जितना भी होगा तुम्हारे रेसिडेंस का, कि इंडियन तुम इंडिया में तुम्हारा घर होगा, तो तुम्हें एक क्या होगा, तुम्हें एक आईडी मिलेगी कि जिसको कहते हैं RIC। उसमें बेसिकली होता है कि तुम्हें एक रजिस्टर करना पड़ता है अपना कि अगर तुम इंडिया के रहते हो, इंडिया में रहते हो, तो अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अपने रेजिडेंस का। उसके हिसाब से क्या होता है कि तुम्हें एक एक पहचान मिलती है कि तू यू हैव अ रेजिडेंस इन इंडिया, इन इंडिया। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। या, और अगर मैं एनआरसी की बात करते हैं, एनआरसी स्टैंड फॉर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो ये एनपीआर के अंदर ही एक रजिस्टर बनेगा जिसमें इंडिया के लीगल सिटीजन्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि इंडिया में अभी बहुत सारे इमिग्रेंट्स भी आके, जैसे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बहुत सारे इमिग्रेंट्स भी दूसरे कंट्रीज से आ गए हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक आपको एक डॉक्यूमेंट शो करने पड़े गवर्नमेंट को जिसमें आप रजिस्टर होंगे, ताकि आप प्रूफ हो सके आप इंडिया के लीगल सिटीजन्स हैं। और उसमें अगर इमिग्रेंट्स को पाया गया है तो उन्हें दूसरे जो जिस कंट्री से वो आए हैं वहां डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली एनआरसी इसीलिए लाया गया है ताकि इंडिया के सिटीजन्स को, जो लीगल सिटीजन, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो दिस इज बेसिकली एनआरसी एंड एनपीआर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टू आर ओपिनियंस, एंड द फर्स्ट पॉइंट हियर इज व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स ऑन सीएए। तो सौजन्य, आप बताना चाहेंगे एक्सपर्ट्स और लीडर्स का क्या रिएक्शन था इसके ऊपर जो सीएए बिल लाया गया है। तो गवर्नमेंट इज स्ट्रांगली सपोर्टिंग दिस आइडिया बिकॉज उनको लगता है कि इससे द होल पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया का जो पूरे सिटीजन्स है इंडिया इंडिया में, सबके डाटा रहेंगे गवर्नमेंट के पास, whereas the opposition is strongly against this idea because they believe कि it's unconstitutional in nature. I do believe the same because it violates Article 14 of the Indian Constitution, which gives every person right to equality and equal protection of law. उसके साथ साथ जो मेन कॉन्सेप्ट है which was been highlighted by the government through this bill exclude various religious groups, even the minority groups such as Jews. At the same time, that person who doesn't believe in God, such as the atheist, or the person who are not. नहीं, तेरी माइक बंद होगी। I'm really sorry for that.
At the same time, Okay. those person who are confused कि God होते हैं या नहीं होते हैं. So the government is trying to segregate and bring people on the base of religion. Whereas there are certain people living in the community जो God who doesn't believe on God, believe that whether there is a God in the living in this world or not. At the same time, there are certain categories of Muslims who are minorities in Pakistan and Bangladesh. They are also excluded. At the same time, non-religious prosecutions are not covered under this concept. At the same time, the government is putting a threshold of 31st December 2014, which acts as a limitation from my point of view, because उसके बाद भी तो हो सकता है violations or prosecution on the basis of religion. Whereas those people who are born after 2014 or wanted to come and become a part of India and wanted to be a citizen of India will not get a permanent settlement under the Citizenship Amendment Act of 2019. So I believe it to be a totally unconstitutional and an idea which is done by the government to gain certain political favor in the election. ओके, सो अगर बात करें कि इज सीए रियली इम्पोर्टेंट इन करंट सिनेरियो, तो सौरभ आपके इस पे क्या व्यूज होंगे कि सीए करंट सिनेरियो में क्या ये रेलेवेंट है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है इसके ऊपर सौरभ? ओके, तो मेरे हिसाब से इन करंट सिनेरियो सीए अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसका जवाब मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक हो सकता हूँ कहीं ना कहीं जगह पे। तो अभी तो वैसे मैं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। बेसिकली इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस सीए, तो अगर तुम सीए में इम्प्लीमेंट कर भी रहे हो तो यू आर पॉइंटिंग डायरेक्टली टू द सर्टेन रिलीजन, जो मेरे को लगता है एक सेक्युलर कंट्री में ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकुलर सेकुलर कंट्री का एक मेरा पॉइंट है कि अगर तुम यू आर इन ए सेकुलर कंट्री, तो तुम्हें ऐसा कोई किसी एक रिलीजन को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए कि अगर तुम इनडायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे हो, डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली तुम कर ही रहे हो। दूसरी बात है कि अगर तुम सारे रिफ्यूजीज या जितने भी बाहर से लोग हैं उन्हें असाइलम प्रोवाइड करा देते हो, तो एक जो हमारी कंट्री है वो बहुत पहले से बहुत पॉपुलेशन पॉपुलस है, मतलब यहाँ पे 140 करोड़ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ रही है अभी भी आबादी। तो अगर तुम किसी बाहर से किसी को असाइलम करा रहे हो, तो एक इकोनॉमिक फैक्टर भी, या फिर तुम रिसोर्सेज देखोगे, वो बहुत एक तरह से स्कैरिसिटी हो सकती है, स्कैरिसिटी ऑफ द रिसोर्सेज, और उस पर इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा साफ साफ। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कल्चर डिफरेंस इन द आसाम विच आर हैपन इन द आसाम, जो कह रहे हैं कि कल्चर डिफरेंस आता है, वो मेरे को पॉइंट, शायद मैंने उस पर इतना डीप रिसर्च नहीं करी, तो मैं उस पर ज्यादा जाऊंगा नहीं। तो मेरे को वाला पॉइंट ज्यादा वो नहीं लगा कि हाउ दे कैन इम्पैक्ट देयर कल्चर। अगर कुछ लोग ज्यादा आ भी रहे हैं, तो कल्चर में तुम अपना कल्चर चला सकते हो साइड बाय साइड, ऐसा नहीं कि तुम वो आने के बाद कल्चर डिफरेंस बढ़ जाएंगे फिर ऐसा कुछ होगा। तो बेसिकली मेरे यही पॉइंट्स हैं कि एक तो सेकुलर कंट्री में तुम ऐसा किसी पर्टिकुलर रीजन को पॉइंट आउट कर रहे हो वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है कि अगर तुम रिफ्यूजीज को अगर तुम यहाँ ला रहे हो, तो उससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ेगा, और साथ ही साथ मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज भी बहुत इम्पैक्ट करेंगे कि उन्हें रखना कहाँ पे, या फिर उन चीज़ों को क्या क्या मतलब करना क्या उनके साथ, ये सब चीज़ें। तो मेरी सभी मेरे पॉइंट्स यही हैं इस पर। ओके, तो इन माय ओपिनियन अगर हम अपने ओपिनियन की बात करूँ, तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन भी तुम लोगों से थोड़ा सिमिलर ही है, क्योंकि टॉकिंग टू योर ओपिनियंस सिमिलर, आई थिंक द सेम। क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हो, आप दूसरे कंट्री के इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप दे रहे हो, तो उसमें कोई रिलीजियस फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्योंकि इमिग्रेंट्स अगर दूसरे कंट्री से अगर आप आ रहे हैं, अगर आप इंडिया, हम लोग बात करते हैं, इंडिया बहुत पहले से ही इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ये रहा है, बड़ा रहा है कि आप आ जाओ, हम आपको सिटीजनशिप देंगे। तो उसमें रिलीजन्स के पॉइंट की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि बात ये है कि आप अगर रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करते हो, तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि जिस रिलीजन को आपने छह आपने धर्म को लिस्ट किया है, सिर्फ वही माइनॉरिटीज है। फॉर एग्जांपल, जैसे सोजाना ने भी बताया इस बात को, कि बांग्लादेश में भी रोहिंग्या मुसलमान बहुत ज्यादा सताए हुए हैं, वहां उनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। तो वो अगर इंडिया में भाग के आते हैं, तो दे आर मुस्लिम्स, दे आर नॉट गेटिंग एनी सिटीजनशिप इन इंडिया। तो अगर हम असाइलम दे ही रहे हैं उन लोगों को, तो सबको मिलना चाहिए। यहाँ पे बाइफर्केशन करना थोड़ा गलत होगा। एंड टॉकिंग अबाउट द सेकंड एस्पेक्ट, कि हाँ, इंडिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, चाइना से हम सरपास कर चुके हैं। यहाँ बहुत प्रॉब्लम भी है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, प्रॉपर यहाँ पे फैसिलिटीज गवर्नमेंट की पहुंच नहीं पाती। उसमें अगर हम और भी सिटीजनशिप को लाते हैं, तो दिस इज गोइंग टू ह्यूज बर्डन ऑन इंडिया। तो ये बहुत जरूरी, इसका करने की जरूरत नहीं थी। अगर कर भी रहे हैं, तो इट शुड नॉट बी ऑन द रिलीजन ग्राउंड्स, आई थिंक द सेम। I really want to mention Article 14, which talk about right before या equality before law. तो वो भी बहुत एग्जैक्टली ज्यादा या हार्म हो रहा है कि हाउ कैन समवन really मैंने भी point यही out a particular religion. पॉइंट ऑफ व्यू दिया
कि it talks about every person have the right to equality and protection of law. Whereas हम्म अगर ये implement होता है, then a certain community, especially the Muslim community, to be precise, is left behind. And हम्म जिससे हमारा concept of secular idea, which is mentioned in the preamble, as well as is highlighted in the basic structure of the Indian Constitution, वो hamper होगा. तो मुझे जो लगता है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करना भी है, द गवर्नमेंट शुड रिमूव द क्राइटेरिया ऑफ रिलीजन एंड शुड ब्रिंग अ बेटर क्राइटेरिया जहां पर एवरी इंडिविजुअल पर्सन, even if he's a non-religious person, so will also be given the citizenship of India if the government believes कि वो prosecute हो रहा है in the neighboring countries or is facing certain problems. बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर दूसरी बात है कि अगर आप बोल रहे हो कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन ही वहाँ पे सताए हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है। अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में सौजन्या ने पहले ही बोला कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ माइनॉरिटी में आते हैं, क्योंकि मुस्लिम में भी बाइफरकेशन है। देयर आर शियाज़, देयर आर सुन्नीज़। तो एक सर्टेन जगह पे शियाज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सुन्नी माइनॉरिटी में आ जाते हैं, वाइस वर्सा। तो ऐसा होता है कि जैसे कि बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे एक सर्टेन कम्युनिटी मुस्लिम की माइनॉरिटी में है और उनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। तो अगर वो इंडिया में असाइलम लेना चाहें तो उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी सीए के अंदर, अगर हम देखा जाए तो। सो दिस इज अ वेरी डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट, सो इट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द करंट सिनेरियो। तो आई ये रियली वांट हमारा टू पॉइंट ऐड है इसके सम ऊपर। वन मोर पॉइंट अबाउट द कंट्रीज, लाइक मैंने पहले भी इससे या बात करी है ऊपर कि हाउ द बांग्लादेश, श्रीलंका, नहीं, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अदर नेबरिंग कंट्रीज, दे डिडंट हैव अ म्यांमार। राइट या टू एग्जैक्टली। get the citizenship of India by the order of the CAA, which is really tough, बिल्कुल। not giving the हाँ right to the other मतलब ये, countries. हाँ एग्जैक्टली। आई आई वैसे, स्ट्रांगली सपोर्ट सौरभ ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि बात भी सही है, क्योंकि अगर आप असाइलम दे रहे हो तो आप सारे नेबरिंग कंट्रीज को दो, क्योंकि वहां पर भी ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटी में और उनको टॉर्चर सहना पड़ रहा है, तो वो लोग भी इंडिया आना चाहे तो उन्हें भी मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि म्यांमार से बहुत इमिग्रेंट्स इंडिया में आए थे, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी बाय दिस Hmm. एक्ट। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी यहाँ भी साउंड कर रहा है, और ये है भी। Okay, so anyone really want to add some So point? this is our video. We talked about the different aspects of Citizenship Amendment Act, the protest of Citizenship Amendment Act, and the various opinions of our opinions, and every aspect basically. So if you like the video, please like it and subscribe to Legal Anecdotes and share it with your friends. Thank you very much. Thanks for watching.